Hey, hi everyone. Good evening. Welcome back to the live session series. This is day 12 of 30 days live session series ka, and we are in a mid phase. We started with some AI and physiotherapy content. और उसके बाद हमने थोड़ा सा बात किया बुक्स के बारे में. Yesterday also we talked about book only. And आज भी हम उसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं to get more insights from that book itself. Uh, it's going good. I think जो एक hesitation था in terms of what to speak about and how we will go through this process, I think that's getting easier. But still that जो एक niche specific चीजें होती है या फिर how to create how to blend into the space जहाँ पे we can create smoothly and uh, put something into pipeline also, इसके ऊपर हम अच्छे से डिटेल में बात कर सकें. I think that is in still process, so we'll come on that part also. But yeah, let's begin with the day 12. We are going good. Let me share the screen and let's start with the book discussion. So हमने कल जो डिस्कस किया था that was about recovery strategies by Greg Lehman. ग्रेग लेमन एक फिजियोथेरेपिस्ट है खुद, एंड उनका खुद का जो वर्क है इट इज मोर अबाउट मूवमेंट ऑप्टिमिज्म. मूवमेंट ऑप्टिमिज्म का मतलब ये होता है सिंपल भाषा के अंदर कि आप जब भी दर्द में हो या फिर जब भी आप किसी इंजरी से गुजर रहे हो तो आप पेसिमिस्ट ना होके, मतलब मूवमेंट से भागते हुए ना, अपने उस रिकवरी फेज के अंदर आप मूवमेंट ऑप्टिमिज्म के साथ चीजों को करते हैं. आप एक ऑप्टिमिज्म के साथ चीजों को देखते हैं कि हाँ ठीक है, आई एम गोइंग थ्रू इंजरी बट movement can help me, and this movement can really make changes in my life slowly and gradually in the long term. That is this book is about ki how pain is really very simple and very effective for our survival, and हम उसे किस तरह से समझ सकते हैं. कल हमने डेफिनेशन के बारे में भी अच्छे से डिस्कस किया था कि इट इज an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage or described in terms of such damage. So यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिल रही है कि ये unpleasant sensation है, sensory and emotional experience है, जो actual damage या फिर potential tissue damage के साथ associate हो सकता है. इंजरी हो या ना हो तभी भी हमको पेन हो सकता है, or it is described in terms of such damage itself. But it is kind of a protective response from our body which really helps us to protect our bodies itself. So it, bottom line is basically it's not about just damage. आपको डैमेज का जो एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है अराउंड पेन, उससे ऊपर उठ के व्हेन यू ट्राई टू थिंक योरसेल्फ एज एन थिंक दैट एक्सपीरियंस इट एज एन मोर ऑफ व्हाट आई विल से normal physiological process of your body, तब जाके आप उसको accept कर पाते हैं, and then you can really see that okay how I can manage it well. बायोसाइकोसोशल मॉडल के बारे में हमने पहले आई थिंक डे 9 के अराउंड बात की थी कि इट्स नॉट ओनली अ बायोलॉजिकल टिश्यू which are cause of your pain. Your psychological part which is more of your belief, your understanding, आपका जो mental framework है, आपके जो experiences हैं, सोशल मॉडल आपको कितना सपोर्ट मिलता है, आपके कितना लाइवली रिलेशनशिप्स हैं अराउंड योर फैमिली एंड अराउंड योर फ्रेंड्स, हाउ सपोर्टिव यू फील ड्यूरिंग दैट पेन प्रोसेस इटसेल्फ, दैट सिग्निफाइज कि कितना इंटेंसिटी में आपको पेन फील होने वाला है. दैट सिग्निफाइज दैट हाउ मच इट विल बी वेरी मोर लाइक हाउ मच इट विल क्रिएट हैवॉक्स इन योर लाइफ. सो अगर आप कंट्रोलेबल्स की बात करें तो आई थिंक साइको सोशल मॉडल is very factors जहाँ पे आप चीजें कंट्रोल कर सकते हो. But yeah, as a physiotherapist, my goal is all like our role is about more of finding all these factors which we can really make change in, and then we can move in a better way. Great. So एक difference होता है which everyone must understand, nociception and the pain itself. ठीक है, तो आप देखेंगे कि नॉसिसेप्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है. नॉक्शियस इज समथिंग व्हिच इज अनप्लेजेंट, और नॉसिसेप्शन का मतलब क्या होता है कि द परसेप्शन ऑफ अनप्लेजेंट स्टिमुलाई. ठीक है, आपके जितने भी पेरिफेरल जो भी पार्ट्स हैं जैसे कि स्किन है, आपका हैंड, लाइक एनीवेयर इन योर बॉडी, लाइक मैनी अराउंड योर बॉडी, देयर आर रिसेप्टर्स प्रेजेंट जिसके थ्रू आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को
फील कर पाते हो. दे आर extraneous receptors also, your internal receptors also. Extraneous receptors के अंदर जो बाहर की जो हमारी सेंसेशन होते हैं, जैसे टच, टेम्परेचर, कैन से प्रेशर, और कैन से लाइट टच, डीप टच, ये जब जो सेंसेशंस होती है, इनको जो कैरी करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, these are called basically, these are responsible for like getting the sensation from the outside world and then transferring it to the with the help of nerve fibers to your brain itself with the spinal cord, and different pathways होते हैं. सिंपल अगर आप इसको इस डायग्राम की तरह समझेंगे तो अगर ये देखेंगे आप, दिस इज नोसिसेप्शन, कि आपको पेन परसेप्शन हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में जाके यहाँ प्रोसेसिंग हुआ. अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को ये समझिए कि एक तरह से चौकीदार है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे चौकीदार बैठे हैं और यहाँ पे पेन को कितना तेजी से भेजना है, कितना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है, वो डिसाइड होता है यहाँ पे, ठीक है. और यहीं से जो ऊपर जब जाता है सिग्नल इन द ब्रेन, you feel that sensation as a pain itself. That nociception is turned into the pain, and then again your brain perceives कि कितना dangerous है, based on past experiences, based on past beliefs, based on present situation, with the help of other stimuli जो आपकी आईज देख रही हैं. आप अगर आपने देखा होगा, आपने जब आप एक घोस्ट हाउस में जाते हैं, ठीक है, तो अगर वो सिचुएशन रियल नहीं है बट आपके ब्रेन को परसीव होता है डेंजर है, आपको उसी तरह के सिम्टम्स फील होते हैं, उसी तरह के एक फीलिंग्स जनरेट होती है कि आई एम इन डेंजर राइट नाउ. आपने देखा होगा अगर आप कभी राइड्स में बैठे हैं तो योर ब्रेन परसीव्स दैट एज एन डेंजर समटाइम. दैट्स व्हाई इट kicks in the adrenaline, it kicks in all the stress hormones, and you feel more of protective for your body, ठीक है. तो your brain determines कि how dangerous is this really, and then you feel more of pain. ये वापस नीचे जाता है और ये चौकीदार को वापस डिसीजन दिया जाता है एट द स्पाइनल कॉर्ड की जो सिग्नल आ रहा है बहुत डेंजरस है, ट्राई टू गिव इट मोर, एंड देन यू फील मोर पेन, ठीक है. जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर आपको एक बैक पेन हुआ, oh sorry, I think I'm having issue with the light currently. You are in a case जहाँ पे you had some injury, ठीक है. आपके पुराने beliefs कहते हैं कि disc is very very sensitive, and अगर आप bending करते हो तो वहाँ पे disc injury हो सकता है, and then you may feel a lot of symptoms. You bend down and आपको लगता है कि there is something wrong in my back. यहाँ से सिग्नल गया जो nociception का to your spinal cord, it goes into your brain, and your brain everything is interpreted like how people around you are saying कि अरे तू आराम कर, you need to stop moving, you need to stop doing things, and then you perceive that as more dangerous. Bending is more dangerous, lifting is more dangerous, and the spinal cord will give signal to your surrounding structures to be more protective, okay, because it is the priority. And then you try to begin more feel more pain, then more spasm, more difficulty in doing movements, and that's how things become more difficult. So that's how it's very very intricate process. And nociception is kind of alert सर्विलेंस सिस्टम, हमको अलर्ट करता है कि समथिंग इज रॉन्ग, बट कितना उसको हमको सीरियसली लेना है नहीं लेना, to the some extent it has, we have our power in our brain, but we cannot override it completely because it's an evolutionary mechanism, but we can change it. We can see यहाँ पे एक बहुत अच्छा लाइन दे रखा है, tissue irritation and nociception is probably unavoidable but it doesn't have to hurt, suffering is optional. That's why I think David Goggins like if you see that person, he's able to push past like its limits, and he's able to do things very very unimaginable in conditions also. It can go up it or it can go down, but you make the call. The brain has centers through which actions needs to be taken. आपके जो beliefs है, that's why knowledge can really bring change in how you perceive the pain. आप किस तरह से अपने पेन को देखते हो, आप किस तरह से आपकी इंजरी या फिर जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है उनको समझते हो, that can make a really difference how you really take care of yourself. इसलिए ही जब एक पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट करता है, the first understanding you need to give him that it's dangerous, but it is
your experience. It is very much normal to have all these things, and it will not harm you. You need to understand, in most of the musculoskeletal condition, it's not the pain itself which causes the distress. It's more a feeling that it's going to be here and I will be debilitated for whole my life in this situation. But that's not the truth. अगर आप वो बिलीव करते हो, आप अगर उस पेन के अराउंड अपनी लाइफ को सेंटर करते हो, देन मे बी इट कैन स्टे एंड इट कैन बिकम योर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू पुट यू इन अ ककून, जहाँ पे आप कुछ एक्शन नहीं लोगे बिकॉज यू वांट टू बी इन पेन देन. Okay, so kind of bit there are multiple factors which affects it, but yeah, your spinal cord is kind of switchboard. यहाँ से आप रेगुलेट कर सकते हो. ऑलरेडी यहाँ पे रेगुलेशन बहुत तरह से होता है. अगर आप देखें, योर ब्रेन हैज इटसेल्फ ऑपोइड जो मैकेनिज्म्स होते हैं, एंडोर्फिन्स हो गए या फिर एनाल्जेसिक जो पाथवेज होते हैं, जहाँ से ब्रेन इटसेल्फ प्रोड्यूसेस some sentences the brain itself produces the endorphins and feel good hormones, and it puts down into the spinal cord, and जो nociception आ रहा होता है बाहर से, that is also getting reduced. So your brain is very powerful machinery, chemical machinery, and I think spinal cord is kind of a switchboard. अगर पेन को बढ़ाना है, spinal cord can again increase the signals, up regulate the things, or it can down regulate the pathways also. मतलब कि बढ़ाना, धक्का देके और तेजी से इसको ऊपर भेजना, या फिर ऊपर से जब आपके पास सिग्नल आ गए स्पाइनल कॉर्ड के पास कि नहीं, इट्स सेफ, इट्स ओके, कट भी लगा, इट्स ओके. यू विल सी सम पीपल, अगर उनको इंजेक्शन लगने वाला है, इंजेक्शन लग भी जाता है, दे विल नॉट फील पेन, दे विल ट्राई टू बी स्ट्रांग एंड they will not feel. I had an experience जहाँ पे I got stitches around 6 to 7 stitches in my feet, very very like small, like तो छोटा वाला finger होता है, उसके around there was a large cut. And there was 6 to 7 stitches, and I endured it pain just by feeling that okay, it's okay, I'm feeling pain, but it's okay. So you can down regulate your pain also, but it becomes how informed and how understanding you feel in terms of your experience. Great. Yes, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली इमर्ज हुआ है, दैट इज न्यूरोटैग थ्योरी. न्यूरोटैग थ्योरी क्या कहते हैं कि आपके जो भी पेन एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एक तरह से स्टोर्ड हो जाते हैं आपके ब्रेन के अंदर, काइंड ऑफ अ न्यूरोटैग, एंड वो टैग्स कैन बी ट्रिगर्ड इन ऑल दो सिचुएशन जो पहले से उस पेन के अराउंड हुई थी. Seems very weird, but the same situations which made you felt that pain experience, or the same movements जिसके दौरान आपको पेन हुआ था, may become more of a trigger for same kind of pain experience, and that is what neurotag is. And sometimes it is sometimes it's very malleable. It can change as per your experience and as per what you are giving it to. So that is, I think, really a good approach for us also कि हम पेन एक्सपीरियंस को चेंज कर सकते हैं. इट्स जस्ट दैट वी नीड टू ऐड मोर ऑफ लेयर्स ऑन दैट न्यूरोटैग. जैसे कि अगर आप बैक पेन के साथ कोई पेशेंट आता है, अगर वो बेंडिंग में उसको डिफिकल्टी हो रही है, द गुड पार्ट इज दैट ट्राई टू डू गो फॉर सेम मूवमेंट, बट ऐड सम मोर लेयर्स टू इट, ऐड सम वेट्स, ऐड सम वेरिएशन, ऐड चेंज द पोजीशन. तो अगर आप किसी इंसान को बोलते हो कि आगे झुक के आपको बेंड करना है, he will feel more difficult, but give him wall support, give him some ball in his at his back, and try to ask him to go down and then try to lean forward. He will do that. You need to, when you're not able to explain or convince, try to confuse the brain. Okay, so that is what can be done. Great. So this is there are very very good stories around this in book. तो आप कभी भी sensitization का एक बहुत अच्छा टॉपिक है इसके अंदर कि sensitization मतलब क्या होता है कि पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन होता है, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन होता है. पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपके जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स है वो ओवरली फायर कर रहे हैं, दे आर गेटिंग मिसफायर्ड ड्यू टू एनी अदर रीजन. ठीक है, स्टिमुलाई ज्यादा लाइक अफेक्टिंग इट द रिसेप्टर इटसेल्फ, और इंजरी प्रोसेसेस, अगर वहां पे इंजरी है, तो केमिकल रिसेप्टर्स, केमिकल जो हमारे केमिकल्स होते हैं जो आर रिस्पांसिबल फॉर द रिसेप्टर generating action potential on the receptors, वो थोड़े से ओवरली दे आर प्रेजेंट देयर, तो जिसकी वजह से जो रिसेप्टर्स हैं वो और ओवरली एक्टिव. जैसे एक डोरबेल है, उसको बजा के किसी ने छोड़ दिया और बजती जा रही है, एंड यू आर फीलिंग दैट
it's irritating. That's what called peripheral sensitization. सेंट्रल सेंसिटाइजेशन इज दैट अब डोरबेल बज भी नहीं रही है लेकिन आपको दिमाग में आवाज सुनाई दे रही है कि हाँ डोरबेल बज रही है. दैट इज व्हाट सेंट्रल सेंसिटाइजेशन मीन. एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. यू गेट sensitized centrally that something is there when there is nothing. I hope I was able to put it in word. Peripheral sensitization can happen in the presence of actual stimuli. Central sensitization can happen in absence of actual stimuli itself. And that's what makes things very very challenging in those cases, because आपको ये मुश्किल हो जाता है समझाना कि जब कोई पेन नहीं है, कब कोई इंजरी नहीं है, तो मुझे पेन क्यों हो रहा है. आपको पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि यू आर सेंट्रली सेंसिटाइज, योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज डिसाइडेड कि डोरबेल बज रहा है और कोई ना कोई इसको बजा के जा रहा है. बट असलियत में ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. आपके जो सिस्टम्स हैं वो ओवरली सेंसिटाइज्ड हैं, और हम उसमें क्या कर सकते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट. हम ये कर सकते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल अश्योर करें पेशेंट को देयर इज नो हार्म टू मूव. हम उसको डोरबेल की आवाज की ना बाकी कुछ म्यूजिक सुनाएं. म्यूजिक का मतलब ये हो सकता है कि मूवमेंट वेरिएशन, जिससे ही फील्स little bit more empowered in those kind of movement. He feels more relaxed. He feels more calm and comforting in the moment itself. And that's how things gets better. Great. So this is the third chapter, I think second chapter. हम key messages के आसपास है. क्या हमने कल इसके बारे में बात की थी. Like these are the major stressors which can really pile up and then cause you more of higher sensitivity. हमने बात की कि बायोसाइकोसोशल जो डोमेन होता है पेन का, उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. स्लीप, वरी, फियर, इश्यू, डैमेज, स्ट्रेस. And these stressors when combined together, they can give you more of high sensitivity. So you need to ask yourself कि does your pain seems to have worse even when you are doing less? क्या आपको लगता है कि जब मैं बिल्कुल भी कुछ काम भी नहीं कर रहा हूँ तभी मुझे पेन ज्यादा होता है, या फिर is your pain worse after stressful days at work or when you have less sleep or when you might be feeling anxious? जब आपकी बैटरी ऑलरेडी डाउन है, maybe that time those are the times when you feel more pain or more stress. Does your pain seem to change when you have other changes in your life? क्या आपको लगता है कि when you make changes, big changes in your routine, आप कुछ नया कुछ start करते हो, then you feel that the pain is at the lower side? So you need to ask all these questions to patients also, and if you are a patient, you need to ask to yourself also that what makes your pain easier, what makes you feel good in a better way. So ये सारे factors, again we are all juggling with all these factors, but what makes things easy, that trying to pick out things and trying to work on these factors individually. So yep, that's and one of the things I think importantly you need to put people's mind that you are inherently strong and stable. There's nothing there to fix in your body. You are good, you are doing great. It's just that we need to find some areas to improve and we need to work on those parts, and you need not to be very choosy कि हाँ इसी से start करना है. You can work on, see, in pain everything works when the patient understands. ठीक है. If patient is trusting you, everything works. ठीक है. In most of the cases, so first is that trust that this can get better. Second, and clear process how it will be getting better. Third, time. And whatever you will do, most of the things will work. Whatever I don't mean by giving some basically all those interventions which may not help the person but also aggravate the things. Movement, loading, working on lifestyle factors, taking care of daily movement habits, stress, sleep, ये सारे फैक्टर्स अगर आप अच्छे से हैंडल करते हो, you will be able to give better care to your people or your patients. Great. Perfect. So यहाँ पे I think there's one more. Yeah, this is pain is multidimensional in the overflowing cup. तो हमने डिस्कस किया कि जो भी मेजर फैक्टर्स होते हैं, कभी कभी वो अगर they are overpowering the person and they are trying to fill the cup more than what is there already, then you may feel that it is kind of overflowing and you are feeling a lot of overwhelming sometimes. So you need to see three things: how much is needed at the people for the people to load them for now,
how fast it needs to be done, and how ready they are to tolerate all these things. ठीक है. So अगर किसी को इंजरी में पेन आ रहा है, किसी को रनिंग के टाइम पेन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल फुट इंजरी था किसी को, एंड दे आर हैविंग पेन ड्यूरिंग रनिंग, you need to consider these three factors कि कितना लोड करना है अभी के लिए, how much was the load, how fast it was they went that type of running, and how ready they were they prepared for that kind of stress. You need to think all these things, and then rehab is also planned around these three factors majorly. So yep, I think I will say that this book is really one of the great books you can read about pain. And once you do this, once you go through with these sections of uh, good learning, उसके बाद आप ये जो last वाला part है, I think this is more about getting an audit done with your patient, getting an audit done with your as a person also. If you are feeling the pain, you can self audit yourself, and then you can see that how the pain is affecting you, and किस तरह से आप इसको generalize तरीके से break down कर सकते हो, किस तरह से आप चीजों को समझ सकते हो. I think these are the questions you can ask yourself, and I think you will get a good understanding of your own pain also. So yep, that's all about this book. I am not going in details because it's too much, and I prepared a kind of in a short session so that हम पेन के बारे में थोड़ा बहुत चंक्स के अंदर समझ सकें, and I hope I was able to provide something of value. Second thing, we're gonna continue with this series, but I am thinking that to break down things into deliberate parts, तो हम कहीं ना कहीं I will invite some people on this platform, so हम उनसे kind of discussions कर सके, उनसे जान सके, उनसे सीख सके. I had good I had good chances in my life in recent years that I met so many people जहाँ से I learned most of the things what I learn know right now. So I'm pretty much hopeful that I will learn good things from those, and we'll see that how we can make things work in long term. So take care, have a great day, and we'll meet again tomorrow, and we'll have more sessions like these in coming days so that we can really learn something new going forward. So take care, bye bye, see you.